Hello guys, in this video we are going to see cloud deployment models, that is public cloud, private cloud and hybrid cloud. So let's start. There are three types of cloud deployment models: all-in cloud, that is public cloud; private cloud, also known as on-premises cloud; and hybrid cloud. So we have public cloud. Public cloud is the service cloud that we use. For example, AWS, GCP, Microsoft, Azure, Salesforce, etc. Public cloud services are self-managed. That means there are service cloud providers that will manage our services, and it is based on pay as per use model. As we have already discussed in the last videos, if you haven't watched that video, I will provide a link in the description section as well as in the I button. So pay as per use model means we will only pay for the service we use. That means जितना resource use किया उतने का ही हम pay करेंगे. Okay. And public cloud service are owned and managed by business. So we don't have to worry about the management of services. They are self-managed. It has low cost because we will only pay for the service we use. इसलिए इसका कॉस्ट भी हमारा काफ़ी कम होगा एंड इट इज़ लोकेशन इंडिपेंडेंट. दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ पब्लिक क्लाउड. वी कैन एक्सेस द सर्विसेज एनीवेयर एंड एवरीवेयर थ्रू आवर इंटरनेट. ओके, एंड it provides scalability. That means we will scale our services as per our use case. Okay, and the services are reliable. That means it is available 24/7 and services are always available and इसका downtime बहुत ही रेयर केसेस में होता है. ओके, सो हमारी वेब एप्लीकेशन भी हमेशा अप रहेगी. बट इसका एक डिसएडवांटेज हो सकता है. इट कैन हैव लो सिक्योरिटी इफ द डाटा इज नॉट इन द इंक्रिप्शन फॉर्म. क्योंकि हमने इसके बारे में पहले भी बात की थी, क्योंकि डाटा हमारा हमेशा HTTPS इंक्रिप्टेड फॉर्म में होना चाहिए सो दैट कोई भी हैकर हमारे डेटा को अटैक ना करता है. ओके, एंड ऑल्सो इट्स परफॉर्मेंसेज डिपेंड ऑन द इंटरनेट स्पीड. अगर इंटरनेट की स्पीड हमारी स्लो होगी तो इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहेगी. एंड there is also one disadvantage that it is less customized. That is, we don't have the full control over the services we use. क्योंकि services हमारे self managed होती हैं, so we have less control over the services. Then we have private cloud. So private cloud is the on-premises infrastructure, that is where local servers are present physically. We have already talked about it in detail. What are private clouds? What are on-premises infrastructure? So basically, private cloud means some companies need privacy of their data. So some companies set up private cloud in their own data centers or with the hosting providers. For example, Microsoft, Ubuntu, etc. Okay, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि प्राइवेट क्लाउड हमें डेटा सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है. ओके, वी कैन हैव द प्रिवेसी, डेटा प्रिवेसी. सो एंड ऑल्सो वी हैव द मोर कंट्रोल ओवर द सर्विसेज. As we have already discussed in on-premises infrastructure, we have to manage the services on our own. So we have more control over the services. Okay, and private cloud has more security. That is, अगर crucial data होगा, so we will store that data in encrypted form. And अगर non-crucial data होगा, so we will store the data in the simple form. Okay, so it provide high security and data privacy. बट इट हैज़ हाई कॉस्ट. क्योंकि हमें सारी सर्विसेज खुद मैनेज करनी पड़ेगी, इस चीज़ की कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी. देयर इज़ वन डिसएडवांटेज ऑफ प्राइवेट क्लाउड. वी कैन नॉट यूज प्राइवेट क्लाउड एवरीवेयर बिकॉज इट इज़ नॉट अवेलेबल. वी कैन ओनली परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन सम रिस्ट्रिक्टेड एरियाज विच इट सपोर्ट्स. ऑल्सो इट प्रोवाइड लिमिटेड स्केलेबिलिटी बिकॉज एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड इन डिटेल कि प्राइवेट क्लाउड में हमें पहले से ही फिक्स करना होता है कि हमें कितनी रैम चाहिए, कितनी स्टोरेज चाहिए, और अगर हमें इसको स्केल करना है तो वी हैव टू डू ऑल दी कंप्यूटेशन, ऑल दी कैलकुलेशन अगेन. ओके, तो उससे हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी और हमें सारा डेटा, सारी मैनेजमेंट फिर से करनी पड़ेगी. सो इट रिक्वायर्ड स्किल्ड पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज द प्राइवेट क्लाउड. सो इसलिए ये कॉस्ट भी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है क्योंकि हमें उन पीपल्स को, जो पीपल मैनेज कर रहे हैं उनको कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, उनको भी पैसा देना पड़ेगा. सो प्राइवेट क्लाउड का एडवांटेज
यही है कि एक तो इसमें हमें ग्रेटर कंट्रोल मिलता है, ओके, और ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है एज कम्पेयर टू पब्लिक क्लाउड। We have hybrid cloud. As the name suggests, hybrid cloud is the combination of public cloud and the private cloud. So, non-critical activities are performed by public cloud and critical activities are performed by private cloud. So, it provides a feature of both the cloud. क्योंकि प्राइवेट क्लाउड में ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, इसलिए हम सारा क्रिटिकल डेटा अपने प्राइवेट क्लाउड में स्टोर करते हैं एंड रेस्ट डेटा वी विल स्टोर इन दी पब्लिक क्लाउड। इफ वी टॉक अबाउट इट्स एग्जांपल, देन Amazon, that is AWS, Microsoft, Google, Cisco, these are the companies that are hybrid cloud providers. Okay, so hybrid clouds are flexible क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग या तो पब्लिक क्लाउड या प्राइवेट क्लाउड यूज कर सकते हैं, ओके, जिसमें भी हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। इट इज़ ऑल्सो सिक्योर एंड इट इज़ ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉस्ट इज लेस देन द प्राइवेट क्लाउड, क्योंकि प्राइवेट क्लाउड में हमें स्किल्ड पीपल भी चाहिए टू मैनेज आवर सर्विसेज, और इसमें हम क्या करेंगे, हम खाली अपना क्रिटिकल डेटा प्राइवेट क्लाउड में स्टोर करेंगे, बाकी हम अपना पब्लिक क्लाउड में सेल्फ मैनेज सर्विसेज में रख सकते हैं। ओके, सो इसका डिसएडवांटेज क्या है? देयर कैन बी नेटवर्किंग इश्यूज। दैट मीन्स अगर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि दोनों क्लाउड की वजह से, तो हमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं नेटवर्किंग के। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। इट कैन बी पॉसिबल कि दोनों क्लाउड आर रनिंग एट डिफरेंट स्टैक्स, ठीक है, दोनों के जो स्टैक्स हैं, दोनों के कंपाइलर डिफरेंट हैं, तो उससे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी आ सकते हैं। ओके, रिलायबिलिटी डिपेंड्स ऑन दी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, कि जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 24/7 हमारा अवेलेबल है या नहीं। The use case of public cloud is that if we need self-managed services or these shared storage, then we can use the public cloud, जो कि हमारा cost effective भी होगा, okay? And we use private cloud for the critical, if we want to store critical data, then we can use the private cloud, okay? And if we need to use the combination of both, then we can choose hybrid cloud. So I hope now you have a good understanding of cloud deployment models. So friends, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So तब तक के लिए टाटा, see you in the next video, stay tuned. Let it bang, bang.